Hello everyone, welcome to the Unacademy. So, my dear friends, let's crack GATE ESE with India's largest online learning platform. Get the plus subscription now and start your journey with the India's best educator and with unlimited live and the recorded video lectures. So, the Unacademy is organizing a combat where a test will be held on the 16th December at 6 p.m. and there are exciting prizes to the winners. So, my dear friends, the questions will be set. It will be a challenging question for the GATE and it will be set by the India's top educator. And just after your test, a detailed solution by the top educator will be given to you. So, my dear friends, no, just don't forget to get the registration in this combat. And let me tell you something about the prize winner. The first prize winner will get the MacBook, the second one will get the iPad, and the third one will get the airpods, and the remaining 100 students will get the voucher of Amazon of the race 1000. So ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए. आप इसको अटेंड करिए. देखिए, प्राइज विनिंग के लिए इसको अटेंड नहीं किया जाता. इसको अटेंड किया जाता है ये जानने के लिए कि आप कितने पानी में हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके कॉम्पिटिटर क्या है? बिकॉज द टेस्ट विल बी हेल्ड इन ऑल इंडिया बेसिस, means all around the students will try to appear this particular test, and you will be a winner amongst almost 20,000 स्टूडेंट. तो ऑल इंडिया बेसिस पे अगर 20,000 के बीच में आप अपने आप को इवेल्युएट कर पा रहे हैं, और जो बच्चे इस टेस्ट को देंगे वो ऑफकोर्स सीरियस होंगे अपने करियर के रिगार्डिंग. सो डोंट फॉरगेट टू गेट द रजिस्ट्रेशन एंड द टेस्ट डेट इज 16th December, that is the tomorrow at 6 p.m. Myself, Ajay Das, I am MTech in Computer Science. I have a teaching experience of the 8+ year. Till now, I have trained almost 20,000 engineering students for the GATE. Work as a freelancer in many reputed institutes of India and also qualified the GATE exam 5 times. Along with that, also qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with the AIR 8 in 2010. So download the Unacademy learning app and start your preparation sitting anywhere, anytime. What you will get? This is the major question which always used to arise before taking the admission in everyone minds कि Unacademy क्यों ज्वाइन करना चाहिए. So my dear friends, I have written some formal things over here, and might be after reading this you will be able to realize that सर ये तो हर जगह मिलता है, ठीक है ना, आपके पास अलग या यूनिक क्या है. So let me tell you something about this. So the first thing you are going to have is the daily life classes. The second one is the structure courses and PDF. The third one is the live test and quizzes, and the finally you get unlimited access. Unlimited access means you can access the lecture again and again until you get the entire concept, जो कि बहुत ही फॉर्मल सा चीज है. बट व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द Unacademy is the learn with the top educator. So my dear friends, I have just listed some of the faculty from the electrical, electronics, civil, similarly from the mechanical and electrical. If you want to know more about the teachers who are associated with the Unacademy, what you can do? You can download the Unacademy learning app and you can check the profile of each and every educators. And there are free special classes available. You can also like appear for the free special classes, and just after getting the satisfaction, you can go for the subscription. Got it? So देखिए, जितने भी एडुकेटर्स हैं, पहली बात ये समझने वाली है कि जितने भी एडुकेटर्स हैं दे आर वेल एक्सपीरियंस. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे IITians को खड़े किए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज के डेट में PSUs में जॉब करते हैं, लाइक IOCL हो गया या IAS हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, देन पावर ग्रिड हो गए, ONGC हो गए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए. तो इन सब जगहों पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हैं. जैसे मैं अपने कंप्यूटर साइंस की बात करूं, सो under my guidance almost 50 students got selected into the PSU. Some are working in the IOCL, some are working in a state electricity board, and कुछ power grid में है, कुछ ISRO में है, कुछ DRDO में. ISRO DRDO you cannot say this is the entirely a PSUs. ये एक्चुअल में आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. तो आपको क्या करना है? आपको बस फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करने हैं. बट इफ यू वांट टू अटेंड द फ्री स्पेशल क्लासेस, देयर इज अ कोड. दिस इज माय कोड. You can use this code IFA. You can use this code to unlock the free special classes. Recently, Unacademy has implemented the new features
to access the free special classes. That is the you have to put a particular code. So अगर आपको कोड यूज करना है तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए. नाउ अंडर द गेट ESE यू नो देयर आर वेरियस ब्रांचेस. लेकिन किन किन ब्रांचेस के लिए अनअकैडमी आपको बेसिकली गेट और ESE का प्रिपरेशन कराती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो देयर आर लाइक वेरियस ब्रांचेस फॉर विच द अनअकैडमी इज गिविंग यू अ प्रिपरेशन फॉर द गेट एंड ESE like electronics, general aptitude, chemical engineering, computer science, mechanical, production, instrumentation, and civil engineering. So these are the branches for which you can go for the subscription for the GATE and ESE. But if you want to get the subscription, there are two different subscription model, and in whatever the subscription model, if you wish to take the subscription, never forget to use the code IFA which is written over here. My dear friends, once you will use this particular code, you will get minimum 10% discount. Got it? So there are two different kind of subscription model. One is the plus जो कि काफी टाइम से चलता आ रहा है, and the second one is the Iconic that recently Unacademy has launched. Got it? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन की. तो देखिए यहाँ पर मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन फीस आपको डिस्क्राइब किया हुआ है. 1 month, 3 months, 6 months. Similarly, this is for the 12 month. See, any competitive exam, if it is not a banking or the lower class exam, will take at least 8 to 10 month of dedication. अगर देखिए जैसे कि बैंकिंग का एग्जाम होता है तो इसके लिए 6 मंथ इनफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा भी बेहतर है अपने लाइफ में, थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से उन्होंने मेहनत किया है, तो उनके लिए 6 मंथ मोर देन इनफ है. बट फॉर द गेट इट इज नॉट लाइक दैट. चाहे वो गेट हो, IIT JEE हो, नीट हो, या आपके IAS मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज हो, ये सब थोड़े से टफेस्ट लेवल के एग्जाम होते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई आई विल एडवाइस इफ यू वांट टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन इनसाइड द प्लस, देन यू मस्ट गो फॉर द 12 month of subscription. So this is the fee structure around 30,000 which is for the 12 month, and I will advise those students who are in a final year or the pass out. Okay, but if you are in a third year or the second year, you can go either for the 18 month or for the 24 month of subscriptions. So this is the fee structure for the 18 month and the 24 month. And in all the situation, if you will apply this code which is written over here AIEFA IFA, you will get minimum 10% discount and your discounted fees will become this. Now let's see what is the Iconic and what is the fee structure of the Iconic. So my dear friends, inside the Iconic there are only two different subscription model. Like the plus, there is no subscription model of the 1, 3 or 6 month. If you want to go for the Iconic, then either you can go for the 12 month of subscription or you can go for the 24 month of subscription. For the 12 month your fees will be around 50,000 and for the 24 month your fees will be around 74,000. Might be you are thinking that sir there is a difference of almost 40% fees between the plus and Iconic if I am looking for or the preparing for the GATE and ESE. Why? So of course this is the genuine question and I need to reply it. Okay, so in all the situations, see, first of all let me clear this one point. In the Iconic, if you are getting the subscription and you can use this code IFA and you will get the minimum 10% discount, and this is finally your applicable fees. Okay, this is finally your applicable fees. अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है. क्या समझने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन है. क्या कंफ्यूजन है कि सर ये कोड अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या सिर्फ आप ही का लेक्चर एक्सेस करने के लिए मिलेगा या दूसरे फैकल्टी को भी मैं एक्सेस कर सकता हूं. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंप्यूटर साइंस में there are 20 number of educators after applying this code, this is just a subscription code. इससे फैकल्टी आप चूज नहीं करते हो. फैकल्टी जो भी आपको पढ़ा रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो आपको पढ़ाएगी ही, ठीक है ना. ये बस आपके डिस्काउंट के पर्पज से है एंड नॉट फॉर द गेट ESE. इफ any one of your friends, colleagues or your relatives are looking for the banking, IIT JEE, NEET, UPSC, anything, almost 45 plus courses are available in the Unacademy platform. If anything they are looking for, they will get the 10% discount after applying this code. Is that clear? Now let's see what is the difference between the plus and Iconic. See, if you are going for the plus, then these are the things which you are getting under the plus.
The first one is the India's best educator that you will get anywhere else. Okay, the second one is the interactive live session and structure courses and PDF live test and quizzes. So these are the things you will get after taking the plus subscription. Now what about the iconic? So if you are going for the iconic, then all the things that you are getting in the plus definitely you will get in iconic, but these are the additional things which you will get once you will take the subscription in a iconic. And that's why I have told you, might be you are thinking you are charging 40% more fees in comparison to the plus. So this is the reason. The first additional things that you are going to have is a personal coach. My dear friends, you can select your personal coach or personal guide, you can say mentor, who will assist you to solve your doubts, who will assist you to clear your concept, and who will just remains like a shadow behind you till your gate exam. Are you getting my point? जो आपके हर मोड पे अगर आप कभी भी डीमोटिवेट हो रहे हो तो आपको मोटिवेट करेगा. तो इट इज लाइक अ पर्सनल लाइक कोच, यू कैन से लाइक दिस. ओके, कोच एक सिंपल सा वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आपने बहुत जगह सुना होगा, क्रिकेट के मैदान में भी आपने सुना होगा कि हर एक प्लेयर का कोच होता है, ठीक है ना. तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं है. द सेकेंड एडवांटेजेस थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू हैव इन आइकनिक इज द स्टडी मटेरियल. सी, लाइफ में हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है. For example, if you are preparing for a competitive exam, then there are three different things in which you need to focus. The first one is the study material, second one is the online test series, the third one is the classroom program. Of course, the study material and the online test series are the effect of क्लासरूम प्रोग्राम, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ना ही आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ना ही आप टेस्ट सीरीज में अच्छे से अपीयर हो सकते हो. गॉट इट? क्योंकि अगर आप अपीयर होते भी हो तो वो आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा जो आपने अपने सोच को डेवलप किया है. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स कम टू द सब्जेक्ट फॉर विच यू पीपल आर वेटिंग फॉर. Let's crack it. This is the slogan of the Unacademy, because we believe we will prepare you in such a way that you would be able to crack your exam in a first attempt. My dear friends, already I have told you this is the complete series of programming and data structure, and today I am going to deal with the part 13, and this is the last part of the programming and data structure. If you want to know these things in details, then you can access all my previous video lectures from the part 1 to part 12. इस पूरे पार्ट में मैंने प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारा का सारा मैंने कराया है. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में मैंने अभी तक पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर में जितने बेसिक चीजें हैं, लाइक लिंक लिस्ट क्या है, एरे क्या होता है, एंड क्यू क्या होता है, एंड स्टैक क्या होता है, बाइनरी ट्री के कितने फॉर्म्स हैं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस. नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द बी एंड बी प्लस ट्री, जहां से एक क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिलेगा. यू माइट बी कंफ्यूज कि ये क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का है या डीबीएमएस का है. ऑफ कोर्स डीबीएमएस में इंडेक्सिंग पर्पज से हम लोग बी प्लस ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन पार्ट. बट अगर बी प्लस ट्री से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट अ बी प्लस ट्री, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट्स लाइक दिस, ठीक है ना, मीन्स इंसर्शन या डिलीशन से कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आज जो मैं बताने वाला हूं जहां से आपका वो सारा क्वेश्चन बनने वाला है. बट इफ इट इज अ मैटर ऑफ इंडेक्सिंग, देन यू हैव टू लर्न द डीबीएमएस, बिकॉज दैट इज द सेपरेट पार्ट. देखिए हर एक चीज का अपना इंप्लीमेंटेशन है. जैसे कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ते हैं टीओसी में, एंड इट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड इन अ कंपाइलर डिजाइन. एंड पूरे का पूरा टीओसी को अगर हम लोग उठा लें तो टीओसी का इंप्लीमेंटेशन अलग अलग फील्ड में भी है, लाइक द फॉर्मल मेथड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है. तो दोज आर द इंप्लीमेंटेशन पार्ट, बट नॉट एक्चुअल द टीओसी. गॉट इट? सो आज मैं अपने क्लास में जो भी अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं वो है कि all the numericals related with the B plus tree. Is that clear? All of you? So, before moving to the B plus tree, I have just taken some of the standard problem from the GATE, okay, which is related with the binary search tree and the heap tree. So, first of all, we will try to solve all these problem and then we will move to the B plus tree. So, let's start. And as I told you, if you want to solve any kind of numerical, then first try to read the numerical very properly. Got it? So this is the problem of GATE 2016 of 2 marks, and this is the quite interesting numerical.
बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के न्यूमेरिकल को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, एंड I have already told you what is the best part in my lecture. I will give you the method how to approach the numerical, because किसी भी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना ही उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होता है. Are you getting my point, all of you? So let's read the question first of all, and gradually we will approach the solution. Okay, just see over here. The number of ways in which the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 can be inserted in a empty binary search tree such that the resulting tree has height 6. And you have to put the numeric answer. And what is the given in the node part? The height of the tree with the single node is 0. Of course, if you are taking a single node, the height is 0. The height is 0. But if you are considering this kind of tree, definitely here the height is 1. Means you need to develop a binary search tree, but the height should be a 6. And how many keys are given? 6 number of keys. So my dear friends, if you will try to create a skew tree, then definitely it will be a height of 6. Yes or no? All of you. Then it will be a height of 6. So with the 6 height, how many binary search tree are possible? They are asking about. तो देखिए, अगर डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो शायद आप सॉल्यूशन की तरफ कभी बढ़ नहीं सकते हो. So what you have to do, you have to first of all solve the small numerical of the same numerical, and by analyzing the answer, or you can say the solution of the small numerical, you can predict the answer of the bigger problem. Got it? Let's see it. I'm taking the 3 different cases, and by the 3 different cases you'd be able to answer me. Suppose n is equal to number of distinct keys. Okay, and in a case 1 I'm assuming n is equal to 1, and you can assume any kind of key. Like for the key I'm assuming the value 1. Fine. So how many binary search tree will be created? Only 1. Okay, now let's take the case 2. In the case 2, the number of distinct keys we are assuming 2, and just take the key. If there are 2 number of keys, the keys are 1 and 2. Then how many binary search trees are possible with the height? See, if number of keys are, how many keys are given inside the question? The number of keys inside the question, it is given as n is equal to 7, and you need to create a binary search tree of the height h is equal to 6. So it is just a less than, height is just the less than number of keys, just less than the number of keys. So just see over here. So if I am assuming the n is equal to 1, definitely we have to assume the height is equal to 0. If I am assuming n is equal to 2, definitely the height should be 1. Yes or no? So just see over here. अगर हम लोग रूट पे 1 को रखते हैं तो राइट चाइल्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सर्च ट्री? 2. If I am placing 2 on the root, then the left child will become 1. So how many possibilities are there? There are 2 number of possibilities. Similarly, consider the case 3. केस 3 में क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कीज में हम लोगों ने 3 लिया है, और कीज क्या है? आप 1 2 3 ले लो. द कीज आर 1 2 and 3. नाउ जस्ट सी ओवर हियर. अगर रूट पे 1 होता है तो डेफिनेटली यहां पर 2 आ सकता है, यहां पर 3 आ सकता है. अगेन if it is a 1 and I am taking a 3 over here, again this one will become the 2. Again if it is a 3, then it will become a 2 and it will become a 1. Again if it is a 3, then this one will become the 1 and this one will become the 2. See over here, in all the binary search tree the height is 2. You cannot create the binary search tree like this. 2, here 1 and here
3. You cannot create this. Why? Because here the height is 1. So if the number of keys are 3, the height must be 2. That kind of binary search tree you need to create. Got it, everyone? So this is not a possible binary search tree according to the question. Now let's realize the things. See, if I am assuming the value of n is equal to 1, the possible number of binary search tree is 2 to the power 0. If I am assuming the number of distinct keys n is equal to 2, the possible number of binary search tree is 2 to the power 1. If I am assuming n is equal to 3, the possible number of binary search tree are how much? 1, 2, 3, 4. The possible number of binary search tree are 2 to the power 2. Similarly, take one more case. So just see over here, if n is equal to 4, n is equal to 4, there are 4 number of keys, 1, 2, 3 and 4. So if I am placing 1 at the root, how many keys will remain on the right hand side? 2, 3 and 4, and by the 3 distinct keys, what are the total number of possibility? Already we have seen it over here, there are 4 number of possibilities. So there are 2 to the power 2 number of possibilities are there. Similarly, if I am keeping the 4 at the root, then definitely the keys 1, 2, 3 will come on the left hand side. So how many possibilities are there? There are 2 to the power 2 number of possibilities are there. So in this situation, the number of binary search tree with the height n minus 1, n minus 1 means 4 minus 1 is equal to 3 is equal to 2 to the power 3. 4 plus 4, that is the 8. Are you getting my point or not? All of you. So my dear friend, just tell me the answer. If I am considering the n is equal to 1, then the total number of binary search tree is 2 to the power 0. If I am considering n is equal to 2, then it is a 2 to the power 1. If n is equal to 3, this is the 2 to the power 2. If n is equal to 4, then it is a 2 to the power 3. If it is a n, then it will be a 2 to the power n minus 1. This is the possible number of binary search tree. And in this situation, what will be the right answer? 2 to the power 6. Total number of distinct keys are 7. So it will become 2 to the power 6. That is equal to 60. And 64 will be the right answer of this question. Got it, everyone? Now let's come to the another problem. So this is the problem of GATE 2018 of 2 marks. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये प्रॉब्लम रिलेटेड है किससे? मीन हीप से. मीन हीप, मैक्स हीप, और यू कैन से द हीप ट्री. So let's see the question and then we will try to approach the solution. The number of possible mean heaps containing each value from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exactly once is. Means इस फॉलोइंग कीज से कितने मीन हीप पॉसिबल है? इस फॉलोइंग कीज से कितने मीन हीप पॉसिबल है? दे आर ट्राइंग टू आस्क द सेम थिंग. सो जस्ट सी ओवर हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन हीप? मीन हीप का मतलब होता है कि द रूट एलिमेंट शुड बी मिनिमम देन इट्स चिल्ड्रन. जो रूट होगा वो हमेशा अपने चाइल्ड से क्या होगा? स्मॉलर होगा. सो जस्ट सी ओवर हियर, इफ आई एम कीपिंग 1 ओवर हियर एट द रूट, सो रूट हमेशा अपने चाइल्ड से स्मॉलर होगा. तो इसके चाइल्ड में हम लोग क्या ले रहे हैं? 2 एंड दिस वन इज वी आर कंसिडरिंग 3. सो 7 एलिमेंट से तो यही बाइनरी ट्री बनेगा ना. ये 4 अलग अलग बॉक्स है. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बॉक्स. ओके, नाउ हाउ मेनी कीज डू वी हैव? जस्ट सी ओवर हियर, वी हैव अ 4, 5, 6, 7. सो हमारे पास जो अब कीज बचे हुए हैं दैट इज द 4, 5 एंड 6, 7. You have a 4 different keys and there are 4 different box. In how many ways can we place these keys inside the box? इस 4 बॉक्स में 4 अलग अलग की को प्लेस करने का कितना पॉसिबिलिटी है? And there is a condition, every box should have at least 1 keys. At least नहीं, exactly 1 keys.
गॉट इट. सो इसके टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? तो देयर आर factorial 4 number of possibilities, and factorial 4 means 4 into 3 into 2 into 1. This implies 24. So अगर मैंने यहां पर रूट पे 2 and 3 रखा है तो 24 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है. नाउ स्वैप इट. अगर सपोज मैंने यहां पर 3 रखा और यहां पर 2 रखा, in this situation again there are how many number of possibilities are there? Factorial 4, and it will become again 24. So till now we have a total 48 number of possibilities. अब देखना ये है कि क्या इसके अलावा भी कोई possibilities है या नहीं है. Got it everyone? So just see over here. Just see over here. अब रूट पे हमेशा 1 ही होगा क्योंकि ये मीन हीप है. Now here I am assuming this is a 2. Here I am assuming this is the 3. Okay. Now just see over here. अब इसके यहां पर एक बॉक्स है, ठीक है ना. इसके यहां पर भी एक बॉक्स होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक बॉक्स होगा और इसके राइट हैंड साइड पे भी एक बॉक्स होगा. मीन हीप है, इस बात को ध्यान में रखना है. तो देखिए डेफिनेटली अगर हम लोग यहां पर 4 रखते हैं तो मेरे पास क्या क्या कीज बच गए. वी हैव अ 5 6 7 and we can place these keys into this box in how many ways? We can place these keys into a factorial 3 ways. Yes or no? So factorial 3 means 6. Okay. Now is there any other possibilities? So just see over here. अब इस 3 को मैंने क्या किया, इस 3 को मैंने यहां पर रख दिया और ये एम्प्टी बॉक्स मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया, ठीक है ना. तो अगेन वी हैव अ 3 डिफरेंट बॉक्स 1 2 एंड 3. सो इस सिचुएशन में भी इसी की पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो अगेन फैक्टोरियल 3 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड दिस इज इक्वल टू 6. So this is the question of the permutation and combination. So you need to find out all the combinations. So just see over here. ये एक पॉसिबिलिटी हो गया. अब इस पूरे ट्री का अगर हम लोग मिरर इमेज कर दें, इस पूरे ट्री का अगर आप मिरर इमेज निकाल लो, मीन्स ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो राइट हैंड साइड पे है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड पे ले जाओ. तो अगेन जितने पॉसिबिलिटी यहां से हुए हैं वो सारा का सारा पॉसिबिलिटी यहां से भी होगा. 6 plus 6. So total here it is coming out to be 12 and it is coming out to be 12. So till now how many possibilities are there? Here I am writing 24 plus 24 plus 20. So this is nothing but 72. Now my question is there any other possibilities? Is there any other possibilities? Let's try to identify. In the root we are placing the 1. Again here I am placing the 2. Here I am placing the suppose 3. और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग 4 की जगह 5 रख रहे हैं. Again this is the one of the box, this is the one of the box and this is the one of the box. Please try to identify these conditions. Okay. So अगर ये 5 है तो यहां पर 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है. Definitely you need to keep the 4 over here. Okay. So ये फिक्स करना पड़ेगा आपको. You have to keep the 4 over here. Now you have a 2 different keys 6 and 7 और इस कीज को 2 बॉक्स में कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं. फैक्टोरियल 2 is equal to 2. Is that fine? Now अब यहां पर देखो कि अगर ये 3 और 4 है तो यहां पर कितने अरेंजमेंट्स हैं. फैक्टोरियल 2. Similarly just exchange it. If it is a 4 and 3, again the elements 6 and 7 can be arranged in a factorial 2 ways. So it will become again 2. Now टेक द मिरर इमेज. इस पूरे ट्री का क्या करना है, मिरर इमेज लेना है. तो यहां से कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं. यू हैव अ टोटल 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. सो इफ यू विल टेक द मिरर इमेज द सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी जनरेटेड, दैट इज द 4. मींस राइट सब ट्री को लेफ्ट पे ले जाना है,
लेफ्ट सब ट्री को राइट पे ले जाना है. तो अगेन देयर इज अ 4 नंबर ऑफ चॉइस. सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस और द पॉसिबल मीनिंग वुड बी अ 8. तो ये जो भी आपने कैलकुलेट किया था, अब इसमें आप प्लस 8 कर दो. ये टोटल कितना हो जाएगा? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटीज? देखिए यहां पर मैंने 5 को रख दिया, क्या यहां पर 6 को रखा जा सकता है? वी कैन नॉट प्लेस द 6 ओवर हियर. व्हाई? क्योंकि अगर आप यहां पर 6 को रखते हो तो प्रॉब्लम क्या जनरेट होगा? अगर आपने 4 को यहां पर भी कर दिया तो 5 को यहां पर नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल वायलेट द कंडीशन ऑफ मीनिंग. यू कैन नॉट प्लेस ईदर 6 और 7 ओवर हियर. सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी you can place the value over here is the 5. Got it? So finally what will be the right answer? The right answer of this question will become 80. तो इस तरह से क्या करना है कि आपको पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना है, और पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करने के बाद यू हैव टू पुट द. क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स कम टू द B and B+2. See, we basically talk about the MW tree. MW search, MW search tree. MW search tree का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? Where M is the maximum number of children. Maximum number of children. Or in some standard book you will find this is the order of tree. This is the order of tree. Meaning of both the terms are same. So please try to understand. M is the MW tree means maximum number of children. And just see over here. Just see over here. Suppose I'm considering, I'm taking example. Okay, I'm considering M is equal to 2. M is equal to 2. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं? 2 हैं. यहां पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं? 2 हैं. सो सी ओवर हियर, किसी भी नोड का, इस नोड का मैक्सिमम चिल्ड्रेन कितना है? 2 है. इसका कितना है? 1 है. इसका कितना है? 0 है. इसका कितना है? अगेन 2 है. इसका 0 है. इसका भी 0 है. तो इस पूरे ट्री में मैक्सिमम चिल्ड्रेन कितने हैं? 2 हैं. सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ binary tree. This will be a binary tree. So a MW tree with the M is equal to 2, it will create a binary tree. Similarly, if I am taking M is equal to 3, now there will be a 3 number of children. And how to represent this tree? Take it. You need to represent the node like this. You need to represent the node like this. So यहाँ पर ये हमारा key 1 है and this one is the key 2. अब ये जो है left children होगा key 1 का, ये right children होगा ये key 1 का. key 2 के केस में जो इसका right children है ये इसका left children होगा और ये इसका right children होगा. Are you getting my point or not? So if the value of M is equal to 3, then number of keys at given node will be m minus 1. So अगर किसी भी MW सर्च ट्री का नंबर ऑफ चाइल्ड m है तो उसमें नंबर ऑफ कीज कितने इंसर्ट हो सकते हैं? दैट इज द m minus 1. So let's see the example, because again this tree will be used for the searching, because I have used the term search over here, and this is the naming convention. Means whenever you are developing a particular MW search tree, then it will follow the same procedure of the binary search tree. Got it? So just see over here. Just see over here. Suppose I am giving you a key. Create a MW search tree, MW
search tree with following keys, and the keys are given as 5 7 2 6 9 20 12 15 25 20. Okay, fine. See over here, and the value of m is given as 3. Means how many children would be there? There will be a maximum 3 number of children. So just see over here. तो 3 चिल्ड्रन है, तो कीज कितने होंगे हर एक नोड पे? हर एक नोड पे नंबर ऑफ कीज कितने होंगे भाई? द नंबर ऑफ कीज विल बी 2. नाउ लेट्स सी ओवर हियर. सबसे पहले कौन एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है? वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू 5, सो 5 विल कम ओवर हियर. Then we are inserting the value 7, so definitely 7 will come over here. Then we are inserting a value, of course 7 इसके right side पे क्यों है? Because the 7 is greater than 5, so it will come on the right position. So we are inserting the 2. So of course whenever new element will come to this root node, then it will be compared by the first element. So if 2 is smaller than 5, then definitely it will come on the left hand side. A node वैसे ही create होगा जैसा सारा का सारा create हो रहा है. So definitely 2 will come over here. Now the next element is 6. Of course 6 is greater than 5 and less than 7. Means अगर 5 से comparison करें तो 5 के right पे आना चाहिए था, और उसके बाद 7 से compare होगा तो 7 के left पे. Means ये दोनों ही node इस 6 को कहाँ send कर रहा है? इस particular position पे. देखिए, the 6 will come over here. Now the next keys is 9. So 9 is greater than 7, greater than 5, greater than 7, so definitely the 9 will come over here. 9 will come over. This is the 9. These are the children keys. Okay. Next element is 20. Of course 20 is greater than 7, greater than 9. It will come over here. Next keys is 15. Of course 15 is greater than 7, greater than 9, but less than 20. So definitely 15 will come over here. Next inserting element is 25. 25 is greater than 7, greater than 20. So we are creating a M-way search tree in such a way so that later on we can search any key value. So definitely 25 will come over here first. Now we are inserting the 28. So 28 is greater than 7, greater than 20, and it is greater than 25. So definitely it will come over. So this is the final M-way search. Got it. This is the final M-way search tree with M is equal to. Now just take another situation, because once you will analyze the situation, you will be able to understand what is the meaning of B and B plus tree. Okay, just see over here. Just see over here. Suppose the question is given as insert keys 1 2 3 4 5 6 7 in given M-way search tree with M is equal to 3. Just see over here. First of all, we are inserting the value 1, so 1 will come over here. Of course, there are 3 different child. Then we are inserting the keys 2. Definitely 2 will come over here. Then we are inserting the keys 3. So 3 is greater than 1, greater than 2. It will come on the right hand side. So a new node will be created and it will contain the value 3. Again, we will try to insert the 4. 4 is greater than 1, greater than 2.
Again we will come over here greater than 3. Definitely it will come over here. Then we are inserting the 5. Of course 5 is greater than 2, greater than 4. Definitely it will come on the right hand side. So here it will be a 5. Similarly it will be a 6. And on the right hand side it will be a 7. Okay. So my dear friends, what kind of tree is being generated? This is nothing but a skew tree, or you can say skew MV tree. So if it is a skew MV tree, then what will be the source time? What will be the time complexity? Time complexity to search a given key. To search a given, you can analyze over here. This is almost order of n. And in the programming languages or the data structure, what is our ultimate motive? Our ultimate motive is to reduce the time complexity. Yes or no? Our ultimate motive is to reduce the time complexity. So, जैसा कि हम लोगों ने देखा था binary search tree. The binary search tree time complexity basically lies between order of n to log of n. So, to reduce the time complexity, next we have learned about the Abel tree. And in case of Abel tree, it will always take the time complexity of the order of log n, which is the minimum time. An Abel tree is nothing but a balanced binary search tree. Similarly, if you will talk about the MV search tree, it might take the time complexity in a order of log n, order of n, which is a linear time. So how to reduce the time complexity? So to reduce the time complexity, we basically learn about the B and B plus tree. To reduce time complexity, we learn B tree. This is the first part, and the second part is B plus. So if someone will ask you the definition of B tree or the B plus tree, what will be your right answer? What will be the definition of B tree? Now you can easily answer me. It is a balanced MV tree. It is a height balance MV tree which is implemented to reduce time. Got it. Now let's see how to create a B tree. Let's see how to create a B tree. See over here. I'm just taking an example. Create B tree with following keys, and keys are given as 1 2 3 4 5 6 7. See over here how to create a B tree. Okay, I'm just trying to create a B tree. See, B tree with m is equal to, of course the value of m will be given. Whenever they are asking the question, the value of m will be given, because without the value of m you cannot find out what will be the total maximum number of children and how many keys can be occupied by a particular node. Okay, so just see over here, if the m is equal to 3, inside a node the maximum number of keys can be stored as a 2 and the number of children will be 3. So we are inserting the 1. Please try to understand. We are inserting the 1 then 2. तो MV search tree में हम लोग क्या कर रहे थे, whenever the new keys will come,
it will come on the right hand side, it will create a new node and it will come on the right hand side. That thing we will never do in case of B tree. So in case of B tree, what is the basic procedure? Whenever the new element is coming, so definitely the position of the new element will be this, because 3 जो है वो 2 से greater है, तो definitely it will come on the right hand side. So इस ट्री के पर्टिकुलर नोड का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2 कीज को स्टोर करने का, बट दिस न्यू की trying to occupy this particular position. So in this situation it will become unbalanced. It will become unbalanced. मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, दिस इज ओवरफ्लो. भाई अगर किसी बॉक्स में, किसी लाइक बकेट में 5 लीटर पानी आप डाल सकते हो, अगर कोई बंदा आकर के उसमें 6 लीटर पानी डालेगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो ही होगा ना. तो ओवरफ्लो हो रहा है, या तो आप उसको किसी दूसरे बकेट में कैच कर लो या तो जमीन में गिरने दो. Are you getting my point or not, all of you? So if the particular node is overflow, then what we will do? We will do the splitting. By creating a new node, we will do the splitting. So definitely the mid element will be splitted. So whenever the mid element will be splitted, what will happen? This one will become the left child and this one will become the right. So just see over here. अब क्या हो रहा है कि जो 2 है वो स्प्लिट होकर के ऊपर चला गया. ठीक है ना, स्प्लिट होकर के ऊपर चला गया और 2 का लेफ्ट चाइल्ड कौन बन गया? 1. द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2 इज 1 एंड द राइट चाइल्ड ऑफ 2 इज 3. क्लियर? नाउ अब ये पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है. दिस इज द बैलेंस. नाउ इंसर्ट द न्यू कीज. व्हाट इज द न्यू कीज? दैट इज द 4. यू माइट बी थिंकिंग कि सर जो 4 है वो 2 से ग्रेटर है तो यहां स्टोर कर दे. नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है. सो व्हाट इज द मेन पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज अबाउट द बी ट्री. प्लीज नोट इट डाउन. जितने भी न्यू की आप इंसर्ट कर रहे हो वो हमेशा लीफ पे आएगा. सबसे पहले वो कहां पर आएगा? लीफ पे आएगा. And the splitting will be done. First of all, the splitting will be done at the leaf part. Means what we have to note down, that every new key will be inserted into leaf node of B tree. Leaf node of B tree. You cannot insert into the intermediate node, means internal node. Are you getting my point? So just see over here. So whenever I am trying to insert the keys value 4, definitely 4 is greater than 2 and greater than 3. It will come over here. Now we are trying to insert the keys 5. अभी भी ये balance है. Balance कब होगा? जब ये overflow होगा. Now we are trying to insert the keys value 5. So what will happen? 5 is greater than 2, greater than 3, greater than 4. So definitely it will try to come over here. तो अब ये पूरा का पूरा नोड क्या हो गया है? अनबैलेंस हो गया है. So if it is unbalanced, what we will do? Definitely the splitting will be done. इसको हम लोग बोलते हैं split. Split is a English term जिसका मतलब होता है किसी चीज को बांट देना. ठीक है ना, किसी चीज को बांट देना टुकड़ों में. ठीक है ना. So similarly, whenever the splitting is being done in this particular node, what will happen? The 4 will be splitted out. So remember one thing, अगर 4 को आप split कर रहे हो, इस node से बाहर निकाल रहे हो, all the time the 3 will remain the left child and the 5 will remain the right child. Now अगर ये split होकर के ऊपर जा रहा है तो it has a 2 different choice. या तो ये अपना खुद का एक नया node create करेगा, या तो ये खुद का अपना एक नया node create करेगा. अगर ये खुद का नया node create करता है तो ट्री का स्ट्रक्चर कभी भी एमवे सर्च ट्री टाइप का नहीं होगा, बिकॉज किसी भी ट्री में एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकता है. तो आप सोचो अगर खुद का एक नया नोड क्रिएट करेगा, देयर विल बी अ 2 डिफरेंट रूट, एंड इन एनी ट्री द रूट इज ओनली 1. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर स्प्लिटिंग विल बी डन, it will come to the upper block. It will come to the upper block
if the space is empty over there it will be inserted, otherwise again the splitting will be done. तो ये जब ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर स्पेस क्या है हमारा, एम्प्टी है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा. तो जस्ट सी ओवर हियर. तो अब क्या हो रहा है, ये हमारा रूट नोड है. रूट नोड में ये 2 है, ये 4 स्प्लिट होने के बाद आया है. 2 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, दिस इज द 1. लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2 इज 1. ठीक है ना, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है डायग्राम से. एंड व्हाट इज द लेफ्ट चाइल्ड, व्हाट विल बी द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4, इट इज अ 3 एंड द राइट चाइल्ड विल बी 5. तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड ये इंडिकेट कर रहा है, और यहां पर क्या होना चाहिए था, इट शुड बी अ 3 एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट शुड बी अ 5. इट शुड बी अ, सो अब ये फिर से बैलेंस हो गया. नाउ इंसर्ट द न्यू नोड. So whenever you are inserting a new node, it will be inserted at the leaf part first. Always remember. तो नया नोड क्या आ रहा है, नया की क्या आ रहा है, 6. So definitely आप यहाँ पर 6 को कभी भी मत रखना, क्योंकि जब भी नया की इंसर्ट होगा वो हमेशा लीफ वाले पार्ट पे पहले आएगा. Got it? So you cannot place over here. So you will compare the 6 with the 2 with the 4. Greater than 2, greater than 4, definitely come on the right hand side. Greater than 5, it will come over here. अभी भी बैलेंस है. नाउ इंसर्ट द 7. सो व्हेनेवर यू आर इंसर्टिंग द 7 is greater than 4, greater than 5, greater than 6, it will come over here. Again, this node is becoming unbalanced. This node is becoming unbalanced क्योंकि इस नोड में नंबर ऑफ कीज ओवरफ्लो हो रहा है. तो डेफिनेटली किसको स्प्लिट करेंगे, मिड वाले वैल्यू को. तो 6 को जब भी स्प्लिट करेंगे, the 5 will remains a left child and the 7 will remains a right child. So of course 6 यहां से स्प्लिट होकर के ऊपर वाले नोड पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर वाले नोड में भी कोई भी प्लेस वैकेंट नहीं है. तो अगेन यहां पर भी स्प्लिटिंग होगा, तो ये 4 क्या होगा, अपर पार्ट पे जाएंगे. लेकिन यहां पर भी अगर स्प्लिटिंग होता है तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, 2. राइट चाइल्ड कौन होगा, 6. इज दैट क्लियर? The left child of the 4 will remains 2 and the right child will remains 6. So just see over here. यहां से देखिए क्या बन रहा है. डेफिनेटली रूट पे कौन आएगा, देखिए सिक्वेंशियली करते चलिए तब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा डायग्राम. रूट पे हमारा आ गया 4. 4 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 2. तो द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4 इज, and what is the left child of 2, that is the 1. It is understood by the diagram, that is the. Similarly इस 4 का राइट चाइल्ड कौन है, 6. राइट चाइल्ड ऑफ 4 इज नथिंग बट 6 हो गई. चलिए अब इसकी बात करते हैं. 6 जहां से स्प्लिट हुआ है, इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन बनेगा, 5. राइट चाइल्ड कौन बनेगा, 7. इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 6 का लेफ्ट चाइल्ड है 5 and the right child of the 6 is 7. Clear everyone? Is anything left? See, 2 का राइट चाइल्ड कौन है, 3 है. तो 2 के राइट चाइल्ड में आपको क्या रखना है, सॉरी दिस इज नॉट अ राइट चाइल्ड. राइट चाइल्ड पार्ट विल बी दिस. 2 के राइट चाइल्ड वाले पार्ट पे किसको रखना है, this one is the right child, this one is the right child and it will remains 3. so आपको पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा. 2 का लेफ्ट चाइल्ड 1 है और राइट चाइल्ड 3 है. सो ऑलवेज मेक राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड 1, राइट चाइल्ड 3. 6 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 5. राइट चाइल्ड 7 है. तो 6 का लेफ्ट चाइल्ड है 5, राइट चाइल्ड है 7. सिमिलरली 4 का लेफ्ट चाइल्ड है 2, राइट है 6. तो 2 and 6. so this will become the final B tree, which is the height balance B tree. You can check the height. अब यहां पर देखो हाइट क्या है, दिस इज द हाइट. और यहां पर देखो सारा का सारा लीफ नोड एक ही लेवल पे है. सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ बी ट्री, द सेकेंड पॉइंट इज वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ बी ट्री, after the creation of
B tree, all the leaf node, all the leaf nodes should come at same level, should come at same. Clear everyone? You can see over here जितने भी लीफ नोड है वो सभी के सभी एक ही लेवल पे है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गेट किस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे. द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन द गेट कैन आस्क, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन. Numeric type means you have to find out the answer and you have to put the numeric answer inside the numeric box by the virtual calculator. So they can ask, the question will be same, how many splitting will be done, how many splitting will be done, and this is the numeric type question. So my dear friends, can you tell me what will be the total number of splitting? एक तो यहां पर हो रहा है, दूसरा यहां पर हो रहा है, तीसरा यहां पर हो रहा है, चौथा यहां पर हो रहा है. तो टोटल 4 number of splitting will be done. And in 2009 the gate has asked what will be the total number of splits at the leaf node. तो ये भी एक सिचुएशन है कि लीफ नोड पे कितने स्प्लिटिंग होंगे. तो यहां पर देखिए, अगर किसी भी ट्री में एक ही नोड है तो यही लीफ नोड है, यही इंटरनल नोड है, तो ऑफ कोर्स द रूट नोड विल बी काउंटेड एज अ लीफ नोड. लेकिन यहां पर देखो तो दिस इज नॉट अ लीफ नोड. लीफ नोड कौन है? बस ये है. यहां पर देखो तो दिस इज द लीफ नोड बट दिस इज नॉट अ लीफ नोड, क्योंकि इसका खुद का पैरेंट है. So if they are asking about the total number of splits in the leaf part, then it will be a 3. In this question it will be a 3. Clear everyone? So इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसी के सब्स्टिट्यूट्स में है आपका B plus ट्री. सो वो भी काफी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है. बस डिफरेंस यही है कि B plus ट्री के केस में whenever the splitting will be done, the same element will be copied to the right hand side. B plus ट्री के केस में आपको क्या करना है? Whenever you are doing the splitting, just see over here what I am trying to say. In case of B plus tree, there is a very small difference between B tree and B plus tree. Suppose ये हमारा कोई एक नोड है, ठीक है ना. ऑलरेडी मैंने 1 को इंसर्ट किया, 2 को इंसर्ट किया. नाउ वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट द कीज वैल्यू 3. ऑफ कोर्स दिस नोड विल रिमेन्स अनबैलेंस्ड, so the splitting will be done. So whenever you are splitting this, the left child of this will remains 1, but the right child of this will remains 2 and 3. 2 and 3. So after the splitting, what will happen? The root node will contain the keys value 2. The left child of this will be 1 and the right child of this will be what? The same keys will be copied on the right hand side. Are you getting my point? So what will happen over here? It will be a 2 and 3. It will be a 2 and 3. And now suppose if you are like inserting the keys value, after this you are inserting the keys value 4. So 4 is greater than 2. Already I have told you every leaf node will come to the leaf part first. So if you are inserting the 4 is greater than 2, again greater than 2, greater than 3. So definitely it will come over here. So definitely it will be splitted. So whenever you are splitting this one will become the left child, but the right child will become what? 3 and 4. And of course after the splitting it will try to come at the leaf root part. So if the root part is vacant, it will be stored over here. Otherwise, again the splitting will be done. So what will be the final trick? Just try to visualize the things. Okay, this one is the 2 and this one is the 3. What is the left child of 2? The left child of 2 is 1. Now what is the left child of 3? Left child of 3 is 2. The left child of 3 is 2. And what will be the right child of 3? It will be a 3 and
it will be a 3 and now if you will try to insert the keys value 5, then definitely it will be splitted, and if it will come on the root, 4 will come over here, again this one will be splitted. So whenever you are doing the split, please remember one thing which is the very important point. Whenever you are splitting on the leaf part, then the same key will be copied on the right hand side. But whenever you are splitting on the internal node, no copy will be done. So always remember these things. The key will be copied to its right child, if and only if splitting is done at leaf node. So let me tell you what will be the final tree, then you will remember these things. So just see over here. So what will happen in this situation? 4 will come on the root and this one will be splitted. So of course the left child of 3 will remains 2 and the right child of it will remains 4. So what will happen at the root part? It will be a 3 and the left child of 3 is nothing but what? Nothing but 2. And the right child of this will remains only 4. It will never be a 3 and 4. Okay. Now, what is the left child of 2? It is a 1. The left child of 2 is 1 over here. And in this situation, what is the left child of right child of 2? The right child of 2 is 2 over here. The right child of 2 is 2 over here. Now, what is the left child of 4? It is a 3 and the right child will remains 4 and 5. Left child of 4 will remains 3 and the right child of 4 will remains 4 and 5. Got it? So you can visualize one thing over here. In the leaf part, all the key appears. All key appears at leaf nodes in B plus tree, which does not happen in case of B tree. And definitely the number of split in B plus tree will be more than the number of split in comparison to the B tree if the same sequence of keys is given. Okay, so just see over here, note down one point. See, important point. The first point is number of split in B plus tree is always greater than equal to number of split in case of B tree. You can visualize this thing, why I am saying this. Second one is all leaf nodes all the keys must appear at leaf nodes in B plus tree which
does not happen, does not happen in. So these are the important point which you need to remember to solve any kind of numerical related with the. So that is the all about the B and B plus T that you have to study in case of data structure. In case of data structure. Got it, everyone? So that's all for today, guys. If you want to get the subscription, you can use my code IFA and you will get the minimum 10% discount. And if you are liking this video, then never forget to subscribe this channel, press the bell icon button to get all the notification, so that whenever I will come online, you will be notified and you wouldn't be able to miss any of my session. And don't forget to put your valuable comments, because it will inspire a lot of students who are looking for the GATE computer science. So thank you very much. Bye. Take care. Again, we will meet on tomorrow with the new subject, that is the theory of computation. So just stay in touch if you want to learn, because this is the complete series that I am going to launch on the tomorrow, and the subject is the theory of computation. In the short, you can say the automata theory. Bye.